Sir, please start. Yeah. So all my dear student, a very good morning to all of you. कैसे है बेटा आप सभी लोग? Hope your preparation is going well in the direction of your attempt. जल्दी से मुझे गुड मॉर्निंग सेंड कीजिए ताकि मैं देख पाऊं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन नाउ. So my dear student, in this particular session, we are going to start a very important chapter in our syllabus, and the core topic of this complete paper number 8 cost accounting, and that is known as overhead. In my personal opinion, this is the most technical and most important topic of this particular subject, paper number 8. Okay, so first of all, let's discuss about the basic in first 2 or 3 minutes, and then we will proceed towards how question will be asked from this particular chapter. Okay, Sandhya, good morning, beta. So basically, all the indirect cost, whether that indirect cost comprises of indirect material, indirect labor, or indirect expense, all the indirect costs are cumulatively known as overhead. Okay, so what will be covered in this terminology overhead? Rent of the premises is an indirect cost. Salary of the staff will be an indirect cost. Depreciation on the machinery, depreciation on the building, repair and maintenance of the machinery, all this will be considered as the indirect cost. Okay. As per cost accounting standard number third, they're given a very important definition, which is appearing in your screen. And that definition is, my dear student, overhead is something which are not directly traceable to a particular cost object in a very economical manner. Now, the important question arises, what do you mean by cost object? So please listen very carefully. Cost object means anything. What is cost object? Anything for which a separate measurement of cost is required. हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कोई भी चीज जिसके लिए हम अलग से खर्चा निकालते हैं वो हमारे लिए कहलाती है cost object. So what do you mean by overhead as per the definition given by the cost accounting standard method? Any indirect cost, any indirect material, indirect labor, and indirect expense, which are definitely not traceable to a particular cost object in an economical, feasible way, is known as the cost object. Clear, my dear friend? So, in this particular chapter, there are total 4 steps. There are total 4 steps in this particular chapter. The first step is primary distribution of overhead. The first step is primary distribution of overhead. The second step is secondary distribution of overhead. The third step is absorption of overhead. And the last step is under oblique over recovery of overhead. I use the term steps. It means unless and until you have completed step number 1 and 2, you cannot proceed towards step number 3. If you want to do step number 4, definitely all the previous 3 steps must be completed before that so that you can apply step number 4. So this complete chapter is divided into 4 topics: primary distribution of overhead, secondary distribution of overhead, absorption of overhead, and under and over recovery of overhead. Can anyone tell me primary distribution of overhead
consist of two terminologies. Can anyone in the audience can communicate me which two concepts together make the primary distribution of overhead? Anyone, beta? Shrivali, Lakshman Singh, Sandhya, anyone? I'm waiting for your response, beta. Please communicate me fast. Which two terminologies or which two concept together makes the primary distribution of overhead? And that concept are allocation and apportionment of overhead. That two concept are allocation and apportionment of overhead. Now the natural question arises, what do you mean by allocation and apportionment of overhead? So it's very simple. When a particular component of overhead is only benefiting a single department, जब कोई पर्टिकुलर ओवरहेड का खर्चा सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को बेनिफिट कर रहा है, then that is known as allocation of overhead. Then what we will do, we will add the cost of that particular indirect cost to that particular department only. The process is known as allocation of overhead. Once again, I am repeating, beta. When a component of overhead is benefiting only a single department in the organization, then the process of adding the cost of such component to that particular department is known as allocation of overhead. And what do you mean by apportionment of overhead? When a component of overhead benefits two or more department. I not said all the department. I have used the word two or more department. Then the process of distributing the cost of such component among all the benefiting department is known as apportionment of overhead. Let's take an example to clear this very point. Suppose I am a shirt manufacturer. I am a shirt manufacturer. Okay. Okay. Now I am having three departments. Stitching department. The second department I want to take is store department. And the third one is maintenance department. So these are total three departments in my organization, and I am a shirt manufacturer. I am having a total of three departments known as stitching department, maintenance department, and store department. Clear? Now I am giving you some components of overhead. Components of overhead. The first point I am giving you is depreciation of sewing machine. The second point, lighting. The third point, storekeeper salary. And the last point is rent of factory. Can you tell me, my dear student, out of this four components of overhead for a shirt manufacturer, point number one, point number two, point number three, which one will be allocated and which one will be apportioned? Okay, so I'm waiting for your answer, beta. Please communicate me fast. According to you, which one will be allocated and which one will be apportioned? I will just again repeat the concept once more. When a component of overhead
benefits only a single department, then the process of adding the cost of such component to that particular department is known as allocation of overhead. और जब वही कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट को बेनिफिट करता है, then the process of distributing such component among those benefiting department is known as reapportionment. Okay, Aksa has given me the answer, but beta, I want the answer of point number 1, 2, 3, and 4. Out of this point number 1, 2, 3, and 4, which one will be allocated and which one will be apportioned? Please communicate me fast. I'm waiting for your answer, beta. Please communicate me fast. Which one will be allocated and which one will be apportioned? Waiting. Please communicate fast, my dear student. So let's see. Sewing machine is available in which department? Stitching department, store department, or maintenance department? Shrivali has given me the correct answer for point number 1. Swati have also given me the correct answer. Aksa has given me the correct answer. Very good, beta. Rajveer, third, storekeeper salary. Alefa has given me the correct answer that point number 2 and point number 4 will be a portion. Very good. Very good, beta. So देखो, इसका पूरा पूरा खर्चा सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में जाएगा. डेप्रीशिएशन ऑफ सेविंग मशीन सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टिचिंग डिपार्टमेंट में अपॉर्शन होगी, बिकॉज सेविंग मशीन इन तीनों डिपार्टमेंट में से किस डिपार्टमेंट में है? ओनली स्टिचिंग डिपार्टमेंट में. सो इट इज बेनिफिटिंग ओनली एंड ओनली द स्टिचिंग डिपार्टमेंट. सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज allocation of overhead. While lighting is required in almost all of the department, therefore the lighting will be apportioned. So this is known as apportionment. Okay. And then storekeeper salary is benefiting only the store department. Therefore, this concept is known as allocation. And now rent of the factory is benefiting all the department. Therefore, it is known as apportionment of overhead. Clear? So now, my dear friend, tell me one more thing. Suppose the depreciation of sewing machine is 10,000 rupee. So we will allocate 10,000 rupee to the stitching department. Now, a very important question. Suppose the lighting is 12,000 rupee. Now, 12,000 rupee is not benefiting a single department. It is benefiting two or more department. Now the question arises, how this 12,000 rupee will be apportioned between these three departments: stitching, stores, and maintenance department. Can you please communicate to me, beta? On what ground or on what logical basis we are to apportion this 12,000 rupee to the stitching department, store department, and the maintenance department? Tell me, my dear students. Let's see. Whatever the component is, we are having a logical base related to that component. In this particular case, lighting will be apportioned logically on the basis of light points.
द डिपार्टमेंट लाइट पॉइंट्स का मतलब सिंपल, जो घर पे अपने स्विचेस होते हैं ना बेटा, तो उस रूम में जितने स्विचेस होंगे उसके आधार पे हम लाइटिंग का खर्चा तीनों ही डिपार्टमेंट में अपॉर्शन कर देंगे. इन केस number of light point is not given to you, then we will use another base known as the floor area. Larger the floor area occupied by any particular department, larger will be the apportionment relating to that. Okay. And regarding the rent of the factory, the most logical base is the floor area based on which we will apportion. So this is known as allocation and apportionment. So let's quickly take an example related to this concept available in our study material, and then we will proceed towards another concept. Let's do this question available in page number 159, illustration number 1. Page number 159, illustration number 1. No, Santosh bhai, not on the basis of average. There is a particular base behind every component of overhead. You have to use the logical base. Alone distribution of overhead to the various department is not sufficient. Distribution on the basis of logical base is required for apportionment. Okay, so let's discuss this question. Illustration number 1. A factory has three production department P1, P2 and P3 and two service department F1 and F2. So first of all, my dear student, can anyone please communicate me the difference between production department and the service department? Anyone? What's the difference between production department and the service department? The difference is very simple. The department which is directly engaged in the converting raw material into finished goods. I use the word directly. The department which are directly engaged in converting the raw material into finished goods are known as production department, while the department which are not directly connected in converting the raw material into finished goods are known as service department. Example of service department are canteen. Example of service department are store department, maintenance department, purchase department. Okay, so this department are known as service department. They are not directly engaged in converting input into output. So they are known as service department. So there are total 5 departments available in this particular question. Out of those 5 departments, 3 are production department and 2 are service department. There will be no difference whatsoever whenever we are doing the very first step, primary distribution of overhead, whether the department is a production department or service department, doesn't matter in step number 1. Okay, the following overhead and other information are extracted. So we have been given rent. I will write it point number 1, repair, depreciation, lighting, supervision, fire insurance for stock, EFI contribution, and the last one is power. And we have been given six logical bases related to this point. So we have to identify, my dear friend, that rent will be apportioned on the basis of, please communicate with me. Rent will be apportioned on which basis? The most logical base to apportion rent will be, please communicate, my dear friends. Definitely area, very good. So rent will be apportioned on the basis of area. So the
make a total of the total area available in the organization. 400 plus 300 plus 270 plus 150 and plus 80. So the total area of is 1200 square feet. Okay. And my rent is 6,000 rupee. So 6,000 rupee divided by 1200. So per square feet, I have to apportion 5 rupee. Per square feet, I have to apportion 5 rupee. So P1 is having 400 square feet of area. So 1 square feet is 5 rupee. So 400 square feet में बताइए कितने रुपए अपॉर्शन हो जाएंगे भैया वहां पे 400 इंटू 5 2000 रुपये अपॉर्शन हो जाएंगे पहले डिपार्टमेंट में लाइक दिस बेटा यू टू अपॉर्शन द सेम चलिए रिपेयर के लिए मुझे लॉजिकल बेस बताइए रिपेयर को मैं किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करूं डोंट लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट बेटा है ना इट विल नॉट वर्क डोंट लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट इट विल नॉट वर्क माय डियर फ्रेंड्स apply your mind. So out of this fixed basis, the most logical base is value of plant. Higher the value of plant, definitely more the technicality is required. So repair of machinery will be apportioned on the basis of value of plant. Depreciation will also be apportioned on the basis of value of plant. Higher the value of the machinery, higher will be the amount of depreciation. Now important lighting. Tell me my dear friend, लाइटिंग के लिए हम किस आधार पर अपने खर्चों को बांटे फॉर लाइटिंग ऑन विच बेसिस वी विल अपॉर्शन अगेन द मोस्ट लॉजिकल बेस इज the most logical base is number of light point, but since number of light point are not given, therefore we will apportion on the basis of area. Okay, now supervision. Tell me, सुपरविजन को आप किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुपरविजन को आप किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नो श्रीवाली इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर नो बेटा एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू कम्युनिकेट नो संध्या supervision is not related with area or room supervision is not related with that point supervision is basically supervising the worker so higher the number of worker available in a particular department higher will be the resources spent on the supervision so number of worker will be the most logical base to apportion the supervision cost so it will be apportioned on the basis of number of worker. Now tell me, my dear student, fire insurance. I have taken an insurance policy on the raw material. Which will be the most logical base to apportion the insurance premium on stock? It's very simple. Please communicate me fast. So it is stock value. Higher the value of stock, higher will be the insurance premium related to that particular stock. Okay. Now, EFI contribution. The full form of EFI is Employee State Insurance. So EFI contribution will be apportioned on the basis of wages because the provident fund contribution and the EFI contribution will be calculated on the wages paid to the worker. Higher the wages paid to the worker, higher will be the amount of provident fund, PF and EFI. Now this is very, very important, my dear friend. Power. Power को हम किस आधार पे apportion करें? Tell me fast. Power को हम किस आधार पर apportion करें? On which basis I will apportion the amount of power. The logical base is horsepower of machinery. Higher the horsepower of machinery, higher will be the consumption related to the power. I think you know at that point,
But once again, I am repeating this. The electricity bill of the organization will be bifurcated into two parts, power and lighting. First of all, what do you mean by power? What do you mean by power? Electricity consumed by the production machine is known as power. Once again, I'm repeating, and then I will ask you what is the most important word in this definition? Electricity consumed by the production machine is known as power. Can you tell me the most important word in this definition? Electricity consumed by the production machine is known as power. Can you please tell me the most important word related to this point? Electricity consumed by the production machine is known as power. So which word is the most important word in this definition? If you didn't focus on that particular word, your answer, your conceptual clarity will be comparatively on the lower side. It's the production word. I have not said electricity consumed by the machine is known as power. No, no, no. I have used the word electricity consumed by the production machine. Computer system is also a machine. Ceiling fan is also a machine. Air conditioning is also a machine. But for costing purpose, those consumption by the air condition or the fan or the computer system will be considered as lighting. So what is power? Electricity consumed by the production machine. वो मशीन जिसके द्वारा हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. The electricity consumed by such machine is known as power, while the artificial lighting and the electricity consumed by non-production machine is cumulatively known as lighting. Okay, so the power will always be having the logical base of horsepower of machine or machine hour run, whichever base is given to you. And the lighting logical base will be number of light points. And in case number of light point is not given, then you will consider the area. You will consider the area. Clear है? चलो बच्चों, बढ़ते हैं अपन आगे. Now this is very, very important. Second step. What is second step? Secondary distribution of overhead. इसको एक और नाम से जाना जाता है. This is also known as reapportionment of overhead. The second step is also known as reapportionment of overhead. So what is reapportionment of overhead? Let's understand this point. What do you mean by reapportionment of overhead? Okay, when overhead of service department is distributed to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, then that is known as secondary distribution of overhead and reapportionment of overhead. Just clarify me one thing. Whether before primary distribution, can we do the secondary distribution of overhead? Tell me with yes or no. Before primary distribution of overhead, can we complete the secondary distribution of overhead? Yes or no? Before primary distribution of overhead, can we do the secondary distribution of overhead? Yes or no? Please communicate fast, beta.
No way, not at all possible, because these are the steps. Unless and until step number one is completed, you cannot complete step number two. So what I want to clarify you, suppose in a particular question in your examination, the requirement part have asked for secondary distribution of overhead. They have not asked you the primary distribution of overhead, but my dear student, you have to check in that particular question whether the primary distribution of overhead has been completed or not. If the primary distribution of overhead has not been completed there, first of all, you have to do the primary distribution, and the primary distribution consists of two concepts: allocation of overhead and the apportionment of overhead. And once the primary distribution of overhead is completed either by you or by the question, then only the secondary distribution of overhead can be started. And what is secondary distribution? When the overhead of service department, if apportioned, if distributed to the production department, then the process is known as secondary distribution of overhead, है ना? चलो, तो देखिए मालिक, अब इसमें क्या नया होने वाला है. So we are having a total of three methods in secondary distribution of overhead. The first method is known as direct distribution method. The second method is known as step distribution method or non-reciprocal method. And the third method is known as reciprocal service method. So there are total three methods. There are total three methods. The first method is known as direct redistribution method. The second method is known as step method. One more name is there, or non-reciprocal method. And the third method is known as reciprocal method. Okay, so a student is not having a choice whether to apply the direct method or the step method or the reciprocal method. It purely depends on the service distribution by the service department. कोई भी आपके पास बेटा चॉइस नहीं है कि आप मेथड नंबर वन अप्लाई करेंगे या मेथड नंबर टू अप्लाई करेंगे या यू विल अप्लाई मेथड नंबर थर्ड. देयर इज नो चॉइस. The concept is each and every method is having a particular logic. If that logic is applied in that particular question, then that particular method will be applicable. Can anyone from the student community communicate to me when the direct method of secondary distribution is applicable? Just participate, beta, because whenever there is a two-way communication in the class, that class is very, very fruitful. Okay, if I only tell you all the concept related to that, definitely it will not put you in a greater advantageous position. Okay, so two-way communication is very much needed in my particular batch, है ना? So whenever I ask you a question, please reply to that particular question based on your understanding. चलिए बच्चों, I am waiting when the direct distribution method is applicable. Recording उसकी QR कोड सवा 11 है ना? ठीक है, 11 डन 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 11 बजे बिल्कुल. या डन सर, बिल्कुल डन. चलेगा, मैं तो 2 आवर ही लूंगा बस.
चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सर। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब लगेगी? प्लीज कम्युनिकेट मी फास्ट, when the direct distribution method will be applicable. चलो बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, when the direct distribution method will be applicable? नो बेटा। चलो, let's suppose there are three production department, PD1. PD stand for production department. Production department 1, production department number 2, and production department number 3. And there are two service departments, service department 1 and service department number 2. Okay, so Alifa has provided me the correct answer, service department 1 and service department 2. The common point among all these three methods, तीनों ही मेथड में क्या कॉमन पॉइंट है? प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. In all the three method, service department will definitely provide its services to the production department. तो ये जो तीनों ही मेथड है, इसमें बिल्कुल एक कॉमन पॉइंट है, एंड दैट कॉमन पॉइंट इज all the service department is providing its services to the production department. है ना? All common point. What is the common point in all these three method? Service department is providing services to the production department. सभी सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे. देयर इज नो डाउट रिलेटेड टू दिस. है ना? सभी सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे मालिक. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो मेथड में डिफरेंस आता है, ये कहां पे आता है? वेदर द सर्विस डिपार्टमेंट are providing its services to each other. क्या सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आई एम गिविंग यू फोर सिचुएशन. प्लीज टेल मी. सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2. बताइए, whether service department 1 and 2 are providing their services to each other, yes or no? क्या सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? whether service department are providing services to each other, yes or no? जल्दी बताओ. क्या सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मालिक या नहीं कर रहे हैं? टेल मी फास्ट. नो. सो इफ सर्विस डिपार्टमेंट इफ नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू ईच अदर, then this method is known as direct distribution method. So मेथड कहलाएगी हमारे लिए डायरेक्ट मेथड. ठीक है. नो, सेकेंड पॉइंट.
Service Department 1 is providing services not only to the production department but also to the service department number 2. But the service department 2 is only providing its services to the production department. They are not providing its services to the service department number 1. So this particular method is known as step method. तो ये हमारे लिए कहलाती है स्टेप मेथड. चलो, इसी का एक और वर्जन है. वन मोर वर्जन इज देयर. ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 is not providing the services while the service department 2 is providing the services. Still this method is known as step method. तो दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट इन रिटर्न द अदर वन इज नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द अदर सर्विस डिपार्टमेंट. Then that method is known as step method or the non-reciprocal method. And the last method available in our syllabus is known as the reciprocal method. In reciprocal method, both the service department are providing its services to each other. आप एक चीज कंपेयर कीजिए बेटा. इन ऑल द फोर एग्जाम्पल, service department are providing services to the production department. ये सब में कॉमन है. सर्विस डिपार्टमेंट बना ही इसके लिए है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, बना ही उसके लिए है. ठीक है. द ओनली डिफरेंशिएशन इज, अगर सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. अगर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन दूसरा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन दैट इज नोन एज स्टेप मेथड. और दोनों ही सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड. क्या बोलते हैं मालिक? रेसिप्रोकल मेथड. बताओ मेरे बच्चों, क्या ये पॉइंट सभी को 100% क्लियर है? इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस पॉइंट, आई विल वेट फॉर फ्यू मिनट. जल्दी बताइए बेटा, क्या आप ये कंसेप्ट नोट डाउन करना चाहते हैं? देन आई विल वेट, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी द सेम. Please communicate with yes or no whether I can provide you the time to copy this concept. जल्दी बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. Okay, please copy this point. Swati has answered me yes sir, I want to copy this point. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या. चलो जल्दी से कॉपी करिए बेटा इसको आप.
Okay, my dear student, hope you have copied the same. Chali. So now let's start the question based on this concept. अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, illustration number 2. A manufacturing company has two production department, fabrication and assembly, and three service departments, store, time office, and maintenance. So total there are five departments, two production department and three service department. So there are total five department. Okay. So the service department is there to provide the services to the production department. Now, the important question is if the service department is providing services to each other, then that is a reciprocal method. But if some service department are providing services to each other while the other is not providing the services to the other department, service department, that is known as step method, also known as non-reciprocal method. Departmental overhead summary for the month of March 2016 is given below. Fabrication and this are the production department. ये दोनों ही हमारे लिए production department है. Okay. While the store, time office and the maintenance are the service department. ये हमारे लिए service department है. ठीक है. Other information relating to the department was production department, service department. Okay. Number of employees are given 40, 30, 20, 16 and 10. Okay. Number of store requisition slip are given 24 and 20. Okay. Machine hour are given 2400 and 1600. Okay. Number of store requisition are given for three department. Now let's check it out. There are three bays. The first one is number of employee. The second is store requisition slip, and the third is machine hour. I'm having three service department 1, 2 and 3. Can you please correlate? क्या आप आपस में इनको कोरिलेट कर सकते हो कि जो मेरा स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए इन तीनों में से कौन सा लॉजिकल बेस होगा? टाइम ऑफिस मीन्स टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, कब वर्कर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है एंड व्हेन द वर्कर इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट. एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट is maintaining the plant and machinery. So please make a logical selection key to apportion, to reapportion the stored service department overhead out of A, B, and C, which logical base will be considered. Please communicate me fast. प्लीज कम्युनिकेट मी फास्ट बेटा. स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिया जाए, नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेशन स्लिप लिया जाए या मशीन आवर लिया जाए. इसको रीअपोर्शन करने के लिए टाइम ऑफिस को कैसे अपोर्शन किया जाए और मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को किस लॉजिकल बेसिस के आधार पर अपोर्शन किया जाए. Swati has communicated that store department, service department expense is to be apportioned, reapportioned on the basis of number of store requisition slip. लॉजिकल पॉइंट है बेटा, बिल्कुल सही है आपका आंसर. ये बटेगा नंबर ऑफ स्टोर्स,
रिक्वेशन स्लिप्स। ठीक है, फिर बोलिए नेक्स्ट आंसर। Second, time office will be apportioned on the basis of number of employees. Time office means a department which is entering the data when the worker are in the factory and the worker are out from the factory. कब वर्कर फैक्ट्री में आया और कब वर्कर फैक्ट्री से बाहर गया, ये कम्युनिकेट कर रहा है। और मेंटेनेंस के लिए हम लेंगे मशीन आवर्स। ओके, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए स्टोर रिक्वेशन स्लिप कितने डिपार्टमेंट में दिया हुआ है। टोटल आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट में स्टोर रिक्वेशन स्लिप दिया हुआ है? 3 डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। सो स्टोर डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज to 2 plus 1. 2 is the production department and 1 is the service department. While time office number of employee are 2 plus 3. Okay, and maintenance is only 2 department. तो आप चेक कीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस डिपार्टमेंट किसको तो सर्विस देगा ही देगा, जल्दी से बताओ। सर्विस डिपार्टमेंट किसको तो सर्विस देगा ही देगा। सर सर्विस डिपार्टमेंट अगर है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस देगा ही देगा, इससे तो मेथड डिसाइड नहीं होती। अब चेक कीजिए, क्या तीनों सर्विस डिपार्टमेंट ने एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड किया है क्या, या कुछ ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है लेकिन बदले में कुछ ने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया? चेक करो बेटा, चेक करिए, क्या तीनों ही सर्विस डिपार्टमेंट ने आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड किया है क्या? नहीं किया है मालिक। जैसे अगर आप टाइम ऑफिस की सर्विस देखें तो टाइम ऑफिस ने स्टोर को भी सर्विस दिया है, मेंटेनेंस को भी सर्विस दिया है। लेकिन जब आप बात करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट की, तो स्टोर डिपार्टमेंट ने सिर्फ मेंटेनेंस को सर्विस दिया है, स्टोर डिपार्टमेंट ने टाइम ऑफिस को सर्विस नहीं दिया है। जब आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने स्टोर और टाइम ऑफिसेस को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया है। इसका मतलब दिस इज नोन एज नॉन रेसिप्रोकल मेथड और स्टेप मेथड, जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर डिपार्टमेंट, बट इन टर्न the other service department is not providing the services to the first department, है ना। तो लिखिए बेटा, इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए there are total 3 service department, there are total 3 service department and 2 production department. तो चेक कीजिए इस प्रकार से बेटा, स्टोर डिपार्टमेंट जब आप देखेंगे तो स्टोर डिपार्टमेंट इन दोनों को तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप को तो सर्विस प्रोवाइड करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सर्विसेज जरूर प्रोवाइड कर रहा है। देन द सेकेंड डिपार्टमेंट इज टाइम डिपार्टमेंट। टाइम डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग, अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, लेकिन बचे हुए दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दी जा रही है। ओके, एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज ओनली प्रोवाइडिंग इट सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मेन पॉइंट है ये, आप चेक कीजिए, इससे डिसाइड होगा
कि क्या एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है क्या मालिक? यस। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लेकिन सभी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इट मींस दिस इज अ नॉन रेसिप्रोकल मेथड। माय डियर स्टूडेंट, बताओ हमने इतना टाइम क्यों दिया इसके आइडेंटिफिकेशन में? कैन एनीवन कम्युनिकेट टू मी? इट्स अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सुब्रता। इट्स अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, assembly department. It's for production department. There is no need to understand what the assembly department will do. Simply for examination purpose, it is more than enough that fabrication and assembly are given as the production department. There is no need to go in depth. What is the function of the assembly department? Okay, Shobhrata. So tell me, my dear friend, why we have focused in the last 10 to 15 minutes regarding the method non-reciprocal or step method? हमने इतना इस पे वेटेज क्यों दिया? Can you please tell me the logic? Because in the question, nowhere it is written that which method you are to apply. आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन बेटा। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये नहीं दिया है कि which method you are to apply. Nowhere in the question. So it is very, very necessary that student should not know how to follow a particular method. Before following a particular method, student should be acquired with the skill that how to identify whether the question is related with the direct method, reciprocal method, or the step method, that is the non-reciprocal method. It is clear to each and everyone, beta? Please confirm with yes or no. It is clear to each and everyone how the method will be decided. Now, a very, very important question in step method. We are having 3 service department. Which service department cost is to be distributed first? Very important question. Please write down. Please write down. In step method, which service department overhead is to be distributed first? कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट को हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैन एनीवन प्रोवाइड मी द आंसर? सर्विस ओनली दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली इन स्टेप मेथड, है ना? नॉन रेसिप्रोकल मेथड में ही एप्लीकेबल होगा। इन डायरेक्ट मेथड एंड इन रेसिप्रोकल मेथड दिस कंसेप्ट विल नॉट अप्लाई। दिस कंसेप्ट विल नॉट अप्लाई। In step method, which service overhead is to be distributed first? The logic is very simple. The service department which is providing services to the maximum department is to be distributed first, followed by another, and the last will be the least number of department which they are providing. Okay, so write the logic, beta. Please write down the logic. Service department who is providing services to maximum departments are to be distributed first. Service department who is providing services to
Least departments are to be distributed last. तो सबसे पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उस सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम एकदम लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो अपनी सर्विसेज एकदम एंड में प्रोवाइड करता है। क्लियर है? चलो, सो लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। तो देखिए मेरे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना दिया है? 24,000, 16,000, 5,000, 4,000 एंड 3,000। तो सबसे पहले हम करेंगे रीअपॉर्शनमेंट। हम सबसे पहले करेंगे मालिक रीअपॉर्शनमेंट। सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट का? वो डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। तो इसका खर्चा कितना है मालिक? 4,000 रुपए। 4,000 का रेशो बताइए, किस रेशो में? नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशो में। 40:30 :20। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अपने आप को सर्विस नहीं देगा, इसलिए यहां पे डैश लगाना है। आप टाइम ऑफिस के नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करेंगे। और 10, तो टोटल लगाइए 40, 30, 20 और 10। 40, 30, 20 और 10। तो इसको आपको 100 रेशियो से डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। करे मालिक डिवाइड। तो ये आ रहा है 1600, 1200, 800 और 400। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। फिर किसने ज्यादा सर्विस दिया है? देन द डिपार्टमेंट नेम इज स्टोर डिपार्टमेंट। उसने 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दिया है। किसको सर्विस नहीं दिया वहां पे नॉट अप्लीकेबल लिख दे अपन। टाइम डिपार्टमेंट को इसने कोई भी सर्विस नहीं दिया, अपने आप को तो सर्विस देगा ही नहीं। सो कितने रुपए का खर्चा है इसका स्टोर डिपार्टमेंट का? बताइए। स्टोर डिपार्टमेंट का कितने रुपए का खर्चा है? प्लीज कम्युनिकेट मी फास्ट। What is the amount of store department that should be reapportioned, whether it's 5,000 or whether it's 5,800? This is very, very important. Whether it's 5,000 or whether it's 5,800. Please communicate me fast. It's 5,800 बेटा, ध्यान दीजिएगा। 5,000 तो खुद के डिपार्टमेंट का खर्चा है, और जो सर्विसेज उसने टाइम डिपार्टमेंट से लिया था उसका खर्चा है 800। फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड related to store department is not 5,000, if it is actually 5,800, है ना? So this is very important point. So 5,800 is to be distributed in the ratio of 24 is to 20 is to 6. तो distribute करें 24 plus 20 plus 6, 50 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 5,800 divided by 50 into 24
It's 2784. It's 2320. And it's 696. Chalo. Last department, maintenance department. Can you tell me the मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ओवरहेड कितने रुपए का ओवरहेड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्लीज कम्युनिकेट मी फास्ट। कितने डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कितने रुपए का ओवरहेड मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्लीज कम्युनिकेट मी फास्ट। सर इट्स 4096। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। क्योंकि देखिए इसका ओवरहेड 3000 भी है, इसका ओवरहेड 400 भी है, इसका ओवरहेड 696 भी है। सो टोटल 4096 का ओवरहेड मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करिए मालिक, 4096 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 24। सो ये आया है 2458 and then it is 1638. So just अब आप टोटल लगा देंगे। So we are having the total of only the production department, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जीरो हो जाते हैं। क्लियर? चलो, now let's move to the another method known as reciprocal method. Reciprocal method. In reciprocal method, we are having a total of 3 मेथड। अगर रेसिप्रोकल मेथड लगेगी बेटा तो यहां पे टोटल 3 मेथड लगती है। पहली रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, and the last one is simultaneous equation method. Simultaneous equation method. So whenever, so first of all tell me beta, Alifa का कहना है from where we got 800 rupee. Oh my dear student, 800 rupee कहां से आया? Which 800 you are talking about beta? It is the ratio 4000 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 40 30 और 20 के रेशियो में, तो यहां से आया 800। इट्स वेरी सिंपल बेटा अलीफा, है ना? सो चलो, सो ये बताइए बेटा, व्हेन द रेसिप्रोकल मेथड विल बी एप्लीकेबल? प्लीज कम्युनिकेट मी फास्ट बेटा। When the reciprocal method is applicable, please communicate me fast. रेसिप्रोकल मेथड कब अप्लाई होती है? जल्दी से बताइए। When the reciprocal method will be applicable? The answer is very simple. When all the service department are not only providing services to the production department, most importantly, when all the service department are providing services to each other also. जब सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन दैट इज नोन एज रिपीटेड ऑफ रेसिप्रोकल मेथड, है ना? व्हेन ऑल द सर्विस डिपार्टमेंट आर सर्विंग ईच अदर, देन दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल मेथड। अब रेसिप्रोकल मेथड जब अप्लाई हो जाएगी, सॉरी, then we are having a total of 3 method: repeated distribution, trial and error, and simultaneous equation method. Let's try this question.
द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ओके, expenses of service department are distributed in the ratio of, please check very carefully, service department X is providing services to service department Y, and service department Y is providing to services to service department X, मतलब X भी services provide कर रहा है Y को, and in return and in reciprocal terms Y is also providing services to the X department. Can you please tell me the method, beta? Service department X is providing services to the service department Y, and in turn service department Y is also providing the services to service department X. Can you please provide me the method, whether it's a direct method, reciprocal method, or non-reciprocal method? It's a reciprocal method because service department are serving each other. Okay, चलो, तो अब यहां पे हमारे पास उन्होंने मेथड लिख के दे दिया है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो देखिए, वी आर हैविंग 3 production department name as ABC and 2 service department known as X and Y. Okay, यहां पर ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 2400 रुपए, 2100 रुपए, 1500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए. नाउ वी विल स्टार्ट रीअपॉर्शनमेंट. चलो बच्चों, अब ध्यान देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट साइकिल. ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ स्टेप मेथड में ही हमें जरूरत पड़ती है कि कौन से सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें पहले बांटना है. whenever you are doing the direct method or the reciprocal method, no need to think that which service department expenses is to be redistributed first. वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन स्टेप मेथड में होता है. डायरेक्ट मेथड और रेसिप्रोकल मेथड में कभी भी ये पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होगा. कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट पे खर्चों को आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे को, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सर्विस डिपार्टमेंट वाई के खर्चे को. चलो, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी, सी और वाई के लिए. में किस रेशो में करना है आपको ये भी दिया हुआ है बेटा, किस रेशो में करना है आपको ये दिया हुआ है. जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन दिस रेशो 20%, 40%, 30% एंड 10%. करिए डिस्ट्रीब्यूट. 700 का 20% 140, 40% 280, 30% 210 एंड 10% 70. अब मुझे बताइए बेटा, जब आप डिपार्टमेंट वाई के खर्चों को जब आप डिपार्टमेंट वाई के खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने रुपए का खर्चा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने रुपए का खर्चा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सर्विस डिपार्टमेंट वाई के खर्चों का, जल्दी बताइए.
सर्विस डिपार्टमेंट वाई के खर्चों का कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, जल्दी से मुझे बताइए। अमाउंट अमाउंट अमाउंट। 970 रुपी। वेरी गुड बेटा, 970 रुपी। तो 970 रुपी किस रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दे हैव गिवन इट टू यू। तो मल्टीप्लाई कीजिए 970 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो इट इज 388, 194, 194 एंड 194। चेक कीजिए, क्या सर्विस डिपार्टमेंट के सभी खर्चे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं क्या? टेल मी यस और नो। सर्विस डिपार्टमेंट के सभी खर्चे एक एक रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं क्या? सर्विस डिपार्टमेंट के सभी खर्चे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं क्या? यस और नो। नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए मालिक। 700 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 900 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 70 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन 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 194 अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब स्क्रीन विजिबल है, चेक कीजिए बेटा, whether the screen is visible now. Please communicate with yes or no, whether the screen is visible now. ओके चलिए, तो बताइए बेटा, कितने रुपए का खर्चा अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है, जल्दी बताओ। कितने रुपए का खर्चा अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है, जल्दी बताइए मालिक। 194। तो अब हमें एक और साइकिल चलाना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट साइकिल, नाउ वी विल स्टार्ट अनदर साइकिल। अब हमें सेकेंड साइकिल और चलाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, सेकेंड साइकिल में डिपार्टमेंट एक्स का कितने रुपए का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है? सेकेंड साइकिल में डिपार्टमेंट एक्स का कितने रुपए का खर्चा अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है? 894 रुपी और 194 रुपी। 894 रुपी और 194 रुपी, क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताइए। कितना खर्चा अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है डिपार्टमेंट एक्स का? 894 और 194। जल्दी बताइए वर्षा जी, जल्दी बताइए। सिर्फ 194, क्योंकि हमने 700 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब ये 194 को वापस उसी रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलिए लेट्स डू दैट। 194 मल्टीप्लाई बाय 20%, इट्स 39, इट्स 77, इट्स 58 एंड द रिमेनिंग इज 19। करेक्ट है। चलो अब बताओ, डिपार्टमेंट वाई का कितने रुपए का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है?
ओनली 19, 900 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 70 भी हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। द ओनली अमाउंट लेफ्ट इज 19 रुपी। तो अब हमें 19 रुपी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 19 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसका 40% आएगा 8 रुपी, 4 रुपी, 4 रुपी और 4 रुपी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बेटा। बताइए कितने रुपए का खर्चा सेकेंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट इवन आफ्टर सेकेंड साइकिल? सेकेंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी हमारा कितना खर्चा अभी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? सिर्फ 4 रुपए। सिर्फ 4 रुपए हमारा अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी पूरा पूरा खर्चा मालिक हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब सिंगल डिजिट का अमाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाए तो आपको और साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है। इस 4 रुपए को आप रेंडमली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दीजिए। क्या बोला बेटा मैंने? 4 रुपए का खर्चा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब सिंगल डिजिट में आपका अमाउंट आ जाए, यू आर नॉट टू मेक अ फर्दर साइकिल टू डिस्ट्रीब्यूट दैट सिंगल डिजिट अमाउंट। रेंडमली अपने मन से 4 रुपए को आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देना है। तो अब ये 4 रुपए को मैं अपने मन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देता हूं, बस बात खत्म। आप वन किसी को भी 2 रुपए दे दो, किसी को भी 1-1 रुपए दे दो, इट डजंट मेक एनी सेंस, कुछ भी चलेगा, लेकिन सिंगल डिजिट अमाउंट के लिए दोबारा साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है ना। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हो जाते हैं जीरो, खर्चे हो जाते हैं जीरो। पक्का? चलो बेटा, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। चलो यहीं से मैं आपको लॉजिक प्रोवाइड करता हूं, प्लीज कम्युनिकेट मी योर आंसर। वेदर द अमाउंट ऑफ 700 and 900 if the final amount of department X और Y, क्या ये जो 700 और 900 रुपी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, क्या ये सर्विस डिपार्टमेंट का फाइनल अमाउंट है क्या? यस और नो? जल्दी से मुझे बताइए। ये जो आपको खर्चा दिख रहा है X और Y का, वेदर दिस हैज बीन द फाइनल अमाउंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y? बताइए बच्चों, क्या ये आपका फाइनल अमाउंट है? Whether this amount is the final amount? No. So this amount will increase whatever services the service department has taken from each other. Once again, I am repeating, beta. This is not the final amount of the service department. This amount will increase by the services taken by the service department. Okay. Based on this point, can you tell me how much services department X has taken from service department Y? बताइए बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट X ने कितनी सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट Y से लिया है? How much services service department X has taken from service department Y on percentage terms? परसेंटेज टर्म्स में आप मुझे बताइए। How much services service department X has taken, not provided. Okay,
चलो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, आपके स्क्रीन में आंसर है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ने कितनी सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट वाई से लिया है, हैव टेकन द सर्विसेज। सर इट्स 20%। बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूंगा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ने कितनी सर्विसेज लिया है डिपार्टमेंट वाई से, देन दैट इज 20% सर्विस लिया है। एंड जस्ट रिवर्स, हाउ मच सर्विसेज हैव बीन टेकन बाय सर्विस डिपार्टमेंट वाई। ध्यान देना बेटा, जस्ट भैया यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज द रेशो, या वो रेशो है जो एक्स ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है। एक्स हैज प्रोवाइडेड डिपार्टमेंट वाई 10% सर्विसेज, वाई हैज प्रोवाइडेड डिपार्टमेंट एक्स 20% services. I'm talking about the services taken, not the services provided. So department X has taken 20% services of Y, and Y have taken 10% services of department X. चलो इसको पहले लिखिए आप। डिपार्टमेंट X has, this is very important word, taken 20% services of Y, and department Y has taken 10% services of department X. चेक करो बेटा, क्या ये पॉइंट से आप एग्री हो? जल्दी बताइए। Department X has taken 20% services of Y, and Department Y has taken 10% services of X. Whether do you agree whatever has been written on the screen? दो चीजें होती है, सर्विसेज, discussing the services rendered. We are discussing the services taken. How much services has been taken by the other department. सही है बेटा? तो चलो अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। We are now discussing the simultaneous equation method. Simultaneous equation method. हम डिस्कस कर रहे हैं simultaneous equation method. Okay. So I have assumed, let the total overhead of service department X be A और सर्विस डिपार्टमेंट Y भी B. मैंने माना टोटल ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट X का A है, वॉट एवर वेरिएबल यू कैन टेक, देयर इज नो पॉइंट इन दैट A B X Y P Q, दैट डजंट मैटर। तो सर्विस डिपार्टमेंट X का खर्चा A है। तो अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज A? प्लीज रिपीट विथ मी, व्हाट इज A? A is total overhead of service department X. So overhead of service department X is 700 plus services, again important word, taken from Y. तो बताइए बेटा, Y का आपने कितने परसेंट सर्विसेज लिया है? जस्ट कम्युनिकेट मी द परसेंटेज। X ने Y से कितने परसेंट सर्विसेज लिया है? लिया है, जल्दी बताइए। हाउ मच सर्विसेज
हैज बीन टेकन बाय डिपार्टमेंट एक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई से डिपार्टमेंट एक्स ने कितने परसेंट सर्विस लिया? दिस इज द मोस्ट एरर प्रोन एरिया, दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग मच एम्फोसिस ऑन दिस पॉइंट। 20%. Okay, so we assume that the total overhead of सर्विस डिपार्टमेंट वाई बी बी, तो बताइए 20% सर्विस लिया है, सो जो भी बी आएगा उसका 20% किसको बियर करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट एक्स को बियर करना पड़ेगा, है ना? चलो बच्चों, जल्दी से अब आप मुझे बी की इक्वेशन बना के बताइए कि बी की इक्वेशन क्या बनेगी। द इक्वेशन ऑफ ए इज 700 प्लस वॉट एवर द अमाउंट ऑफ बी, दैट इज 20%। सो यहां पे भी वही आएगा बेटा, 900 प्लस सर्विसेज टेकन फ्रॉम एक्स। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? 900 प्लस 900 प्लस कितना आएगा? जल्दी बताइए। 900 प्लस इक्वेशन, बिल्कुल सही है। 900 प्लस 0.1, इसने कितनी सर्विस लिया है? 10%। किससे? ए से। तो 900 प्लस 0.1 ए। क्लियर है बेटा? चलो, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो अब लिख दीजिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी अगर आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो ए इज इक्वल टू 700 प्लस 0.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 900 प्लस 0.1 ए। सॉल्व कीजिए। ए इज इक्वल टू 700 प्लस 180, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इट इज इक्वल टू 0.02 ए। अब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इट विल बी 0.98 ए इज इक्वल टू 880। तो ए इज इक्वल टू निकाल लीजिए कितना आया बेटा? 880 डिवाइडेड बाय 0.98, इट्स 898 रुपी। और यही अमाउंट बेटा रिपीटेड से भी आता है, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर इज अ डिफरेंस इन द मेथड, है ना? मेथड में डिफरेंस है। देखिए यही अमाउंट 898 यहां पे भी आता है। जरा इन सबका टोटल लगाइए बेटा मेरे साथ आप। जो आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से किया वही आंसर यहां पे भी आएगा। टोटल लगाइए, 700 प्लस 194 प्लस 4। टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 700 प्लस 198 प्लस 4, 4 को तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया था। 700 प्लस 194 प्लस 4, 898। यहां से भी वही आंसर आता है, बट द ओनली डिफरेंस इज वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। आंसर विल रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंस विल बी वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब इस ए की वैल्यू आपको पता लग गई है 898, तो जल्दी से आप मुझे बी का अमाउंट बता दीजिए। बी का अमाउंट कितना आ रहा है? अगर ए का अमाउंट 898 आ रहा है तो बी का अमाउंट कितना आ रहा है? जल्दी से मुझे आप कम्युनिकेट करिए।
बताइए मेरे बच्चों, बी का अमाउंट कितना आ रहा है, जल्दी से पुट अप करिए और मुझे बी का अमाउंट बताइए. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी? इट्स वेरी सिंपल. 900 plus 0.1 into 898. So it's 989 और 998 might be, है ना. Doesn't make a difference. 990 भी चलेगा ना, 989 भी चलेगा. ओके बेटा, चलो. So in this session we have completed the primary distribution and the secondary distribution. In the next session, we will move further towards the most important topic of this particular chapter, that is the absorption of overhead. In other words, it's the recovery of overhead. How we will do the recovery of overhead, we will discuss in the next session. Hope this session benefits each and every student, beta. Please communicate me whether the session benefits you a lot. It's clear the conceptual clarity with you regarding this particular chapter overhead, because in my particular opinion, this is the most important chapter of your entire syllabus, not only from this paper 8 viewpoint, but also in the final stage, this paper will provide the base. So please communicate, beta, whether this lecture benefits you regarding the conceptual clarity. Sir, please end. Sir, please end the session. Sanjeev ji, please end the session. Sanjeev ji, please end the session. Sir, shall I end the session? Yeah, sir, please. Okay. Thank you, sir. Thank you, Thank you. students. Thank you.